स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आपके सोशल साइंस के यूनिट 1 इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड 2 का सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कर लेते हैं, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो अगर हम लोग नेशनलिज्म की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th century. It marked the downfall of feudalism and the beginning of Renaissance, which literally means rebirth. अगर हम लोग बात करें फीलिंग की, नेशनलिज्म का फीलिंग जो है यूरोप में कब स्टार्ट हुआ? 19th century में। और यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। The feeling of nationalism was illustrated by a French artist named Frédéric Seurat in 1848. He prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of a democratic and social republics as he called them. So basically यहाँ पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट की बात हो रही है, उसका ड्रीम था नेशनलिज्म का। वो चाहता था दैट एक पूरा ऐसा वर्ल्ड हो विच इज डेमोक्रेटिक एंड ऑफ सोशल रिपब्लिक्स, एंड द पेंटिंग्स डिपिक्टेड हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट institutions and the establishment of democratic and social republics. इसके बाद ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन देखे हुए हैं। It also illustrated the Statue of Liberty holding a torch of enlightenment and the Charter of the Rights of Man. The concepts of liberty, equality, fraternity and nationalism dominated the social and political scene of Europe in the 19th century. इसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। सो व्हाट इज द बिगिनिंग एंड द सेलिएंट फीचर्स? Till 1789, France was under absolute monarchy. However, the French Revolution in 1789 was an influential event that marked the age of revolutions in Europe. The major outcome of the revolution was the formation of a constitutional monarchy, thereby a remarkable reduction in royal and feudal privileges. It paved the way for achievement of bigger goals of national identity and national pride, which can aptly be called as nationalism. The revolution transferred the sovereignty from the monarch to the people. The ideas of la patrie, that is the fatherland, and les citoyens, the citizen, were adopted. The Estates General was renamed as the National Assembly, which was elected by the body of active citizens. French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland, and Italy in the 1790s with the promise of liberating the people from their despotic rulers. Now, what are the key facts here? The French Revolution was primarily caused due to the financial crisis and began with storming the Bastille 14th July 1789. In October 1815, Napoleon was exiled to the remote island of St. Helena into the South Atlantic Ocean, where he remained until he died on May 5, 1821 at the age of 51. So that was the beginning and salient features of the French Revolution. In the second video, we are going to discuss about Napoleon. So stay tuned with us and do subscribe our channel for more information.